इस पे आ नहीं रहा, वीडियो आ नहीं रहा है इसका। चल रहा है। नहीं, यूट्यूब पे जा रहा है। Once again, many thanks to all the participants school in in-house training program. The third session of today is Happy Teachers Create Happy Classroom. The presenter of this session is Mr. Nirantar Prakash Singh from DAV Bhagalpur. Participant schools are Ramakrishna Vidya Mandir, Ranuchak, DAV Barari, JNB Nagarpara, Guru Kripa Academy Kalgaon, New Era Public School Munger, New Horizon School Bhagalpur, SBM Jamalpur, SBM Munger, Columbus English Academy Shahpur, Himalayan Academy Kalgaon. So, I would like to call Mr. Nirantar Prakash Singh to start this very meeting. Over to Nirantar Prakash Singh. Thank you, sir. Let me set up my screen. Yes. Okay, thank you for giving me this wonderful opportunity to address this learned gathering. I'm Nirantar Prakash Singh, Computer Science from DAV Public School, Bhagalpur. I'm a teacher to just like you all, but I have an added advantage that I have got many opportunities like this one to share and enrich my knowledge while discussing this topics to this learning gathering. So today's topic Good afternoon. On behalf of DAV Public School, Bhagalpur. Good afternoon, everybody.
Am I audible? I'll request all the participating schools to keep their video on. Okay, we'll start it once again. Thank you for giving me this wonderful opportunity to address this learned gathering. I am Nirendra Prakash Singh, PGT Computer Science from DV Public School, Barari, Bhagalpur. I am a teacher too, just like you all, but also have an added advantage that I have got many opportunities like this one to share and enrich my knowledge while discussing these beautiful topics with the learned gathering. So today's topic that is already present on the screen is happy teachers create happy classrooms. So let's have a quick look at the subtopics. We'll be discussing about happiness quotient, happiness index, happy teachers, happy classrooms, happy schools, and I'll be beginning this with a beautiful quote that teachers as ambassadors of happiness in the classroom. Okay, so let's first recall the technical term happiness quotient. Okay, just a minute, I'll be okay, so the happiness quotient is a concept that measures approximately the measure of happiness each person has achieved in his life. So actually speaking, happiness is the fundamental objective of all human effort and activity in all cultures and societies. So the study of happiness has long been under the purview of philosophical speculations. There was no proper empirical measure of happiness, which made it an area of speculations and uncertainties. So researchers, psychologists, however, in recent years, with the development of reliable and valid measures of or questionnaires of happiness, help to make significant evolution of knowledge in the field of happiness and positive psychology. So now we can say that happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. वो कहते हैं ना, सोचने, कहने और करने के बीच में पूरा तालमेल. So okay, let's check what happiness is for us. We'll start with an activity, and I would like all of you to write down all the words which come to your mind when you think of happiness. I'll be giving you a minute for that. So you can also write it in the comment box.
Okay. Food, Okay. games, Good. travel, Good. Okay. So what did we get? So we are getting quite a lot of words. friends, Friends, family, food. Fine. So let's give a clap for ourselves because we all know already what these things are. I have also given quite points on this. These are the keywords that makes us happy. So by going through all these keywords, we can no doubt say that happiness is an inside job. So only a happy person can feel it. A happy person is someone who is frequently cheerful, only occasionally sad, and generally satisfied with his or her life. So, what is happiness? What's our conclusion of happiness? By definition, it is feeling of pleasure and positivity, also sense of well-being, joy, or contentment. But we have still a yes question. Why is being happy so important? We know that nobody is happy all the time because they think so. One can be happy all the time if you want to be. The only question we need to think is, why is being happy so important? So it's extremely vital to set our own goals in life. If a person doesn't have a goal, he or she can't be happy. But if they set a goal, then every step taken forward towards achieving that goal will make them happy. Being happy will help us achieve many other cherished personal ambitions and goals. If we are always happy, then we can have the potential to change many other lives just by being ourselves. That is, just by being happy. We don't know who is imagining a role model in us, the teachers, right? हम लोग जिस पर्सपेक्टिव से क्लासरूम में जाते हैं, लोग हमको देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना मनस्थिति बदल भी लेते हैं और वो देखते हैं, कई लोग तो सोचते हैं कि काश हम इनकी तरह बन पाए, right? So we see in our daily classroom situations that sometimes a classroom is full of enthusiasm is in a particular period, but in some other totally dull or bored. Can we figure out why this happens with the same set of students? Anybody? एक ही क्लास है, उसमें एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर उनका माइंडसेट टोटली अलग है और किसी दूसरे पीरियड में उनका माइंडसेट टोटली डिफरेंट हो जाता है. सिचुएशन ही एकदम अलग, बिल्कुल अलग क्लास लगती है. वो क्यों? Because of a teacher, of course. Yes, that is also what. उनका मूड अपना अलग है, वो तो है, और उनका मूड जो चेंज होगा वो बिल्कुल, वो जो टीचर्स हैं उनको देख करके भी उनका मन जो है वो टोटली बदल जाता है. So I think I have a wonderful quote regarding this as well. Some causes happiness wherever they go, while others whenever they go. Well, that was just on a lighter note. Please don't mind. Now, why is the happiness of teachers so very important? First of all, you are a teacher by choice. Can't say no, right? Because if you say so, you should actually be not here.
You are a great influence on the student. We have already seen how many roles a teacher performs. For you, success is a measure of quality of students who are mentored under your guidance. When we see our mentored student coming to us after 5 to 10 years with handsome personalities and asking, "Pehchana sir, 2005 ke Rahul," and then even we don't remember them, the smile that their face carry after remembering those days make our current day fantastic, right? You foster social responsibilities, broaden imaginations. Sorry, I skipped that point. Okay, fine. So you foster that social responsibilities, broaden imaginations, and offer encouragement to support the student. So if you are not happy and approachable, then how could you expect a student to come to you for any type of help he or she needs? So we need to be thankful because you are associated with the most blissful generation. And the most importantly, you are still going to school, isn't it? And thus you are forever young, because only young students go to school, right? We too are young because we are also going to school. Well, the teacher have a unique responsibility to teach students to love learning. What you do each day will make a difference. So don't forget that you are extraordinary. Want to see how? If you are a teacher, you are also a life coach, motivator, discovery guide, trip coordinator, negotiator, cheerleader, rule enforcer, an eye opener, yes, role model, organizer, reality checker, fundraiser, even nose wiper, IT specialist, counselor, handwriting expert. And this is not all. We still have some more. A trainer, a meditator, a truth detector, scheduler, decorator, an event planner, entertainment, and not last but not the least, dream instiller. Right? So it's quite a lot of roles to live up to. So what should a teacher do to keep himself or herself happy? Remember that you are the greatest asset to your classroom and to your students. You are responsible for facilitating your students' growth and learning. It's an awesome privilege and responsibility as well. And if you don't protect the asset that is yourself, your students will be impacted as well. It is not only okay to care of yourself, it is absolutely necessary. Somebody has very well said that a classroom is a reflection of what the teacher is. So coming back to the question, what should a teacher do to keep himself or herself happy? Let us see a 7-step formula. Number 1, you are extraordinary. So believe in yourself, that is your inner strength. Stop comparing yourself to the colleagues. That is most important. अगर आप अपने आप की तुलना हमेशा करते हैं तो आप अपना यूनिकनेस कहाँ जानेंगे, नो डाउट. और दूसरी बात कि हाँ, कई बार आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी और उसके कारण आप जो है जो स्माइल आप कैरी करते हैं वो आप कैरी नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल जजमेंटल भी बन जाएंगे. यस, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू योर कलीग्स. Then always keep a positive attitude and engage yourself in positive talks. हमेशा पता है कि पॉजिटिव एनर्जी अगर आसपास में है तो वो हमेशा आपको खुश रखेगी, और आप खुश तो आपका इन्वायरमेंट खुश, और इन्वायरमेंट को ही तो खुश रखना है. बिल्कुल.
तो इस चीज से हमें अपने आप को दूर रखना है. Keep a positive attitude and engage yourself only in positive talks. Then take time for yourself. Your physical and psychological well-being, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके लिए जब तक आप टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे अपने ऊपर, तब तक ये चीज संभव नहीं. ठीक है. और इसको करने के लिए कुछ और चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं. दैट इज लोअर योर एक्सपेक्टेशंस. अगर आपका एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बहुत हाई है तो प्रॉब्लम होगा. तो अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा डाउन कीजिए. रियलिस्टिक अप्रोच में लेकर के आइए. बी फैक्चुअल, बी रियलिस्टिक, एंड thus you will be happy. Promise yourself to acquire a new skill and expand your scope of learning. जब तक आप अपने ऊपर टाइम नहीं देंगे ताकि आप नए स्किल्स को सीख सके, क्योंकि जो भी चीज आप जनरली देखते हैं अपने एनवायरमेंट में चल रहा है, तो आपको लगता है कि काश ये चीज हम जानते. तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा. यस. और अगर कोई ये सोचता है हमने जितना सीख लिया अब हमारे आगे कुछ सीखने के लिए नहीं है, तो वो गलत. लेटेस्ट जो इसके अंदर है वो है कि कितने टीचर्स मोबाइल का कितना यूज करते थे पहले, और ये कोविड सिचुएशन के टाइम पर जब ऑनलाइन क्लासेस का अचानक से भार आया, तो हम लोगों ने अपने आप को कितना मॉडिफाई किया, कितना अपडेट किया. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली नीड टू बी. क्योंकि जब आप इन चीजों को सीख लेते हैं, जब जान जाते हैं, तो उसके बाद जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आपके चेहरे पर एक अलग से स्माइल आती है, वो अगेन एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है. ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस एंड नॉट पोजेशंस. ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं वो सीखने पर ज्यादा ध्यान दीजिए. हम खाली एसेट्स को इकट्ठा करते रहते हैं, पोजेशंस, कि ये हमारे पास है, वो है, जो फिजिकल चीजें हैं उनसे खुश होने की बजाय अपने एक्सपीरियंसेस से खुश होना सीखिए. अगर टीचर हैं, हमेशा हम एक लॉन्ग लास्टिंग लर्नर हैं, तो हमें हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ फिजिकल पोजेशंस के ऊपर. सो यस, एक्सपीरियंस अपने आप को लेते, इनपुट हमेशा लेते रहना चाहिए. Okay, so now that we have discussed the formula of happy teacher, we should see what effect it has. यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर. क्या चीज दिख रहा है? हैप्पी फेसेस, नो डाउट. एंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो निश्चित तौर पर एक क्लास होगा, राइट? सो यस, इट इज अ हैप्पी क्लासरूम. Yes. So let's together make this world happier and start it by making our classroom happy. Teachers' happiness is equal to a happy nest, right? Yes. Very buzzing. Yes. So जो छोटे छोटे चूजे हैं वो सारे एक ही क्लास में हैं, so we could call it as a happy nest, right? So because it's the teacher's happiness that can create a classroom a happy nest. So let's see what strategies will be helpful to achieve the same. There are certain strategies for making happy. एक sum up मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर किया. The well done response, redirection response, ask yourself some questions, set healthy boundaries, focus on processing, avoid scapegoating, reflect. So these are the points that we are going to discuss one by one. So first point taken from the book Well Done Response by Ken Blanchard. The well done response empowers one to build positive relationships between the teacher and pupils, between the parents and children, or in fact any relationship. So a beautiful line in the book says, praise progress. It's a moving target. So the second point is the redirection response. This response
needs conscious practice before it becomes a part of teacher's behavior. You have to describe the error or problem and explain its negative impact. Express your continuing trust and confidence in the student. हमेशा हमें जो भी प्रॉब्लमेटिक पार्ट लगता है उसको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रूप में डिस्कस करने की जरूरत है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डिस्कस करने की जरूरत है। और जब कभी भी स्टूडेंट की तरफ से कोई इंटरेक्शन आता है तो उसे कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि जो कुछ भी उस स्टूडेंट ने सोचा है, समझा है, वो उसकी मनस्थिति, वो उसके एक्सपीरियंसेस है, तो वो अपने हिसाब से सोच रहा है। बिल्कुल, तो उसके रेस्पॉन्स को हमेशा एक्टिवली आपको लेना है और उसके बाद आपको उसमें ट्रस्ट दिखाना कि यस जो उसने बोला है वो ठीक है, और उसके जो भी उसकी सोच है उसको एक डायरेक्शन देना है कि देखो आपने ये जो सोचा है, इस तरीके से जो सोचा है, इसके अंदर आगे ये पहलू और आ सकते हैं और भी ऐड, उसके अंदर कुछ और चीज ऐड की जा सकती है। तो ये अप्रोच रहेगा तो स्टूडेंट को हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि हाँ मुझे जो आता है वो मैं बोल पाने में सक्षम हूँ, और उसके बाद टीचर हमेशा मुझे उस चीज को एक्नॉलेज करते हैं, so they'll be happy again. So ask yourself, what kind of values and attitudes do I need to develop? अपने बारे में भी, जो हम लोग खुद से सीखते हैं उसमें भी कुछ और ऐड करने की जरूरत है। What kind of skills would I require to develop key life skills such as managing emotions and problem solving? How will I maintain a balance between the academic performance and emotional well-being? 20 or 30 years from now, how will I want my students to remember me? किस रूप में वो हमें देखना चाहते हैं? तो जब तक हम उनके लाइफ के ऊपर एक भी इम्पैक्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमें याद नहीं रखेंगे, और अगर एक भी ऐसा पॉइंट है जहां पर कि हमने उसको इम्पैक्ट किया है तो निश्चित तौर पर वो जब रिवर्स जब आएंगे हमारे पास तो हमको उसी रूप में वो देखेंगे। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल right. So in the classroom, set healthy boundaries. The boundaries can be established in different ways. Children need to feel secure and cared for, and boundary line helps achieve this. Boundaries can be established in different ways. एक एग्जाम्पल है, लोअर क्लास में हम लोग ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैफिक लाइट रूल का। मिडिल स्कूल के अंदर और हाई स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स मे बी इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ क्लास एग्रीमेंट एंड द कंसिक्वेंसेस। खुद से उनको बोले कि भाई ठीक है, क्लासरूम में हमको क्या क्या करना है, उसके लिए एक रूल बुक तैयार कीजिए। अपना संविधान, क्लास का अपना संविधान हो तो संविधान है तो उसके अंदर रूल्स अगर बना रहे हैं तो उसको तोड़ने पर कंसिक्वेंसेस क्या होंगे वो भी वही डिसाइड करें। सो एक्टिवली जब स्टूडेंट को हम एंगेज करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ निश्चित तौर पर हम क्लास के अंदर एक पार्ट एंड पार्सल हैं, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनको नजर आएगा, और उसके बाद निश्चित तौर पर क्लासरूम का माहौल अलग होगा। So instead of only focusing on results, focus on the process. It's equally important. Children are happy when they can experience, explore, observe, communicate. In other words, when they are fully engaged in the process of learning. Yes, the journey. The journey, yes. Experience is there. पूरा। Who enjoy it? जब तक उनको पूरी तरीके से वो अपने आप को इन्वॉल्व महसूस नहीं करेंगे तब तक उनका प्रोग्रेस नहीं होगा। तो प्रोसेस के अंदर आना चाहिए। कितना सीखा वो बात की बात है, लेकिन सीखने का जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, ये ज्यादा जरूरी है। इस चीज पर हाँ बिल्कुल, टू वे इंटरेक्शन इज इम्पोर्टेंट। प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोडक्ट। हम लोग हमेशा प्रोडक्ट पर ध्यान देते रहते हैं और प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते। सिर्फ आउटपुट पर ध्यान नहीं देना है, हमें पूरे प्रोसेस पर ध्यान देना है। बिल्कुल,
और उसके अंदर ये भी, हाँ उसके अंदर ये भी है कि उसका जो एक स्टूडेंट है जिसको हम सो कॉल्ड एकेडमिकली पुअर कहते हैं कि उसमें ये नहीं है, तो हाँ, तो जो हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो स्टैंडर्ड सबके लिए बराबर नहीं हो सकता है, तो उसने जितना अचीव किया उसको उसके हिसाब से भी एक्नॉलेज करना चाहिए, राइट। ओके, सो 6th पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, अवॉइड स्केपगोटिंग, टीचर्स शुड बी ऑब्जर्वेंट एंड लिसन विथ ऑल देयर एंटीनास आउट, यूज ऑल योर सेंसेस व्हाइल ऑब्जर्विंग, डू नॉट एक्ट एज एन एम्पायर, रिफ्रेन फ्रॉम बीइंग जजमेंटल। यस, सिर्फ हाँ लेवल नहीं कर रहे हैं ना, इसने जो आंसर दिया इसका तो हमेशा ऐसा ही होता है, नो। ऑफ कोर्स अगर उसमें कोई पॉजिटिविटी दिखाई देती है तो आप उसको बोल सकते हैं कि ठीक है तुम इसी तरीके से जवाब दो, और हाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम इसी टाइप से कुछ आंसर लेकर के आओगे। ओके, एंड 7th पॉइंट जो है वो है रिफ्लेक्ट, चेंज द स्टूडेंट, चेंज द एनवायरनमेंट, चेंज योरसेल्फ, है कि नहीं। हमें पता है कि अगर स्टूडेंट को चेंज करना है तो स्टूडेंट को चेंज करने से पहले वहां का इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा, और इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद बिल्कुल, इसके बाद ही हम ये काम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये देखो हम चेंज हुए, और ये चेंज जो है विजिबल, सबके सामने वो विजिबल होना चाहिए, तभी जो है इसका एक्चुअल असर जो है वो हो पाएगा। एक पॉइंट अवॉइड स्केपगोटिंग जी, हम दूसरे को ब्लेम कर दें, ये दूसरे को ब्लेम कर दें और अपने आप को रिस्पांसिबिलिटी से बचाएं। बिल्कुल। सो ठीक है, बिल्कुल टीचर्स शुड बी ऑब्जर्वेंट, क्योंकि जब होता है ना कि एक कोई क्वेश्चन आंसर करता है, कोई क्वेश्चन आपने क्लास के अंदर रेज किया और उस टाइम पर स्टूडेंट ने एक आंसर दिया, इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक छोटा सा आप लोग के साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ, जिसको मैं अपने क्लास के अंदर भी शेयर करता हूँ। मैं चूंकि आईसीटी का टीचर हूँ और इसमें ज्यादातर चीजें प्रैक्टिकली सिखाने की बात होती है, तो जब भी हम स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं कि बताओ प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या थ्योरी, तो नो डाउट आंसर सीधे आता है प्रैक्टिकल। तो इसी चीज के ऊपर है कि थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिए हम लोग मैं स्टोरी शेयर करता हूँ। तो एक टीचर थे हिंदी के, और वो जो है क्लास के अंदर एक टॉपिक था मद्यपान, बहुत ही खराब चीज है, तो उसके कैसे उसको रिफ्लेक्ट करें, दिखाएं कैसे, तो इसके लिए बोला जाता है प्रैक्टिकली चीजों को दिखाते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। तो उसी के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो टीचर जो है 2 ग्लास कांच वाले लेके गए, एक में पानी और एक में शराब था, अल्कोहल, और 2 कीड़े लिए, और एक को उन्होंने पानी में डाला और एक को अल्कोहल में, और अब उसके बाद 1 मिनट के अंदर जो है उसने असर दिखाना स्टार्ट किया। तो पानी वाला जो कीड़ा था वो तो आराम से तैर रहा था, उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं था, लेकिन जो शराब वाला था वो तो मर गया। तो ये दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि बताओ बच्चों इससे हमने क्या सीखा। तो उसके बाद पीछे एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया कि सर मैं बताऊंगा। बोले हाँ बिल्कुल बताओ। तो उसने बताया कि सर इससे ये सीखा कि अगर हमारे पेट में कीड़े हो तो हमें पी लेना चाहिए और उससे सारे कीड़े मर जाएंगे। सो ये सुनते ही सभी के चेहरे पर स्माइल, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऑडियंस लाइव ऑडियंस के साथ भी देख सकते हैं। तो यही हुआ। तो ये स्टोरी बताने के पीछे पर्पस क्या है? तो इसके पीछे मेन पर्पस ये है कि जब हम किसी चीज को सिर्फ दिखाते हैं तो उसके सोचने का सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, तो उसको एक गाइडेड देना जरूरी होता है। तो आप जब तक आप आंसर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट की तरफ से आंसर्स ले नहीं रहे हैं, और उसको जब तक आप फिल्टर करके वापस उन तक जो पहुंचाना है वो नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आपका जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा। ओके, सो मूविंग ऑन, there are certain teaching strategies to create happy students.
we have to welcome them with open arms. We need not be biased by any means. क्योंकि कई बार होता है कि एक स्टूडेंट आ रहा है तो उसके प्रति हम लोग कहते हैं वाह ये स्टूडेंट आया, और दूसरा स्टूडेंट आ रहा है तो तुम क्यों आ गए, तुम यहाँ, तुमको कौन बुलाया, इस तरीके से। तो किसी भी रूप में हमको बायस्ड नहीं होना चाहिए, उनको हमें हमेशा ओपन आर्म से ग्रीट करना चाहिए। So give something to look forward. They are very enthusiastic. So you need to cater to their needs. Give some extra knowledge to explore. हमेशा कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा देंगे, तभी वो आपके पास हमेशा एक अलग लेवल ऑफ ट्रस्ट लेकर के आएगा कि सर के पास जा रहे हैं, मैम के पास जा रहे हैं, तो हाँ, तो आपको एक अलग लेवल का एक्सपेक्टेंस मिलेगा कि यहाँ से हमको जरूर कुछ मिलेगा। Invest time to know them. Students love personal interaction. So encash that by knowing them, by interacting with them. Spend some informal quality time and get social with them. Make use of this technology. After school interaction भी कर सकते हैं, simply कुछ मैसेज उनको पोस्ट कर सकते हैं, या हम सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, अगर व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हैं तो वो बच्चे कुछ स्टेटस लगाते हैं। स्कूल में भी ऐसा कोई टाइम मिलता है जब उससे हम एक नॉर्मली उससे पर्सनल लेवल पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, स्कूल में तो टाइम स्पेंड कर ही सकते हैं, बट अगर उनको हमें स्पेशली और जानना है तो उनके हम विदाउट एक्चुअली उनके साथ डायरेक्ट बातचीत किए भी हम ये काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर जो भी वो पोस्ट करते हैं तो उसके पोस्ट पर एक छोटा सा कमेंट, आपका एक छोटा सा कमेंट जो है वो बहुत गहरा इम्पैक्ट करता है। बगैर आपके बोले, बगैर आपके एक्चुअली बोले, वो क्लासरूम का एक बज़वर्ड भी बन सकता है। आपका क्लासरूम के अंदर जो है जा करके जब बच्चा बताता है कि सर ने मेरे पोस्ट के ऊपर ये कमेंट किया था, तो वो एक अलग अटैचमेंट क्रिएट करता है। So do try a post to post a message on their wall, and your one post will become the talk of the class, right? And you will get an upper edge. So use humor and give them choices. If you let them speak their mind in the class in front of their mates, they are less likely to interfere in your classroom delivery. क्योंकि बोलने का उनको मौका ही नहीं मिलता है। तो अगर आप अपने क्लासरूम प्लानिंग के अंदर अगर इस चीज को इंक्लूड कर ले कि आप उनको मौका दें कि वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके, तो निश्चित तौर पर आपका जो So incorporate music and allow them to play. There are a lot of technology enhancements available nowadays that help learning while playing, right? So using music will enlighten them. उनके अंदर अलग ही लेवल आ जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने एक छोटा सा टास्क दिया है, बोर्ड पर आपने क्वेश्चन दे दिया है, और अब उसके बाद उनको 1-2 मिनट का टाइम है जिसके अंदर वो एक्टिव करेंगे, और आप एक्टिव उतने नहीं रहेंगे, आप खाली ऑब्जर्वेंट रहेंगे। तो ऐसे में क्लासरूम का माहौल बनाने के लिए आप एक सॉफ्ट म्यूजिक या उस टाइप का बैकग्राउंड म्यूजिक अगर दे देंगे तो उनका नेचुरली कंसंट्रेशन बढ़ेगा और वो कहेंगे वाह क्लास में कुछ चेंज आया। सो जो मोनोटोनस रूटीन है उसमें एक ब्रेक मिलेगा उनको। सो गिव देयर ब्रेन अ ब्रेक। मोनोटोनस टास्क आर क्वाइट बोरिंग, राइट? हाँ, तो बिल्कुल। तो अब ऐसे में थोड़ा सा आपका भी हेल्प चाहिए, आप लोग की तरफ से कुछ टास्क मिलना चाहिए कि क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि ये मोनोटोनस रूटीन जो है उसको ब्रेक किया जा सके, उनके ब्रेन को एक ब्रेक दिया जा सके। एनीथिंग, एनी आइडियाज? चलिए, टाइम हमारे पास कम है तो और स्लाइड सभी हैं हमारे पास, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इस चीज को हम लोग ऑफ ग्रिड रखें, बाद में इसको इंक्लूड कर लेंगे हम लोग, ठीक है? सो द न्यू नॉर्मल ऑफ हैप्पी क्लासरूम इज हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल। ये जो नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है यही अब फ्यूचर है। बिल्कुल, in coming days we will have to embrace this as a regular practice. We'll need to deploy innovations and technologies to cater to the needs of diverse learners.
the same need to be planned accordingly. The blended and flipped classrooms are very useful in this regard. Blended learning के ऊपर हम लोगों ने पहले सेशंस किए हुए हैं, तो वहां से आपको पता है बिल्कुल। हाँ, और ये सारी की सारी चीजें हैं, they are nothing but strategies to engage the students. उनका अटेंशन स्पैन ज्यादा चाहिए आपको, सो जितना ज्यादा टाइम हम लोग उस पर देंगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल वो लोग महसूस करेंगे, उतना ज्यादा हमारा जो लर्निंग कर्व है वो अप जाएगा। If the time permits, we can have a quick quiz on quizzes also, but I don't think ये पूरा जो हमारा पार्ट है उसको खत्म करने के बाद हम लोग इसके ऊपर आएंगे एक बार फिर से। एक 30 डेज का चैलेंज है टीचर्स के, उसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इसी चीज को। ये 30 डे हैप्पी टीचर चैलेंज है। क्या क्या है वही यहाँ पर मैंने पिछले स्लाइड्स में रखे हुए थे, तो जितना टाइम है हम लोग इसके ऊपर एक एक करके छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, pull a student aside to tell them how much they have improved and how proud you are of them. आप पहले दिन मतलब हर दिन एक एक टास्क आप ले लीजिए, आपको भी लगेगा कि हम अपने मोनोटोनस वर्क को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। किसी एक स्टूडेंट को साइड में आप टारगेट कर लीजिए और उसको बगल में बुलाइए और उसके अचीवमेंट्स के ऊपर उसके साथ डिस्कस कीजिए। तो निश्चित तौर पर ये सर्कल में अगर आप चलेगा तो हर एक महीने बाद आप किसी को अगर करेंगे तो 10-12 लोगों को आप निश्चित तौर पर एक क्लास के अंदर डील कर पाएंगे। मल्टीपल क्लासेस है तो मल्टीपल क्लासेस में इन चीजों को आप कर पाएंगे। So organize an area in your classroom that has become a bit chaotic, जैसे ड्रॉर है, बुक केस है, या टीचर्स डेस्क है, या सामने के स्टूडेंट्स ने अगर मान लीजिए अपने डेस्क पर कुछ फैलाया हुआ है तो उसको जस्ट और कुछ नहीं, आपको कुछ ज्यादा नहीं, जाकर के खुद से उसको कर ले, उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, आप खुद जाकर के वो प्रैक्टिस करके दिखा दीजिए उनको। चौक और डस्टर जो भी अगर अरेंज नहीं है तो आप जाकर के अगर उसको आप डेली रूटीन में एक पर्टिकुलर जगह पर आप लेक्चर डेस्क को लेकर के जाते हैं या एक पर्टिकुलर जगह पर आप खड़े होकर के कुछ बात करते हैं, कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, बोर्ड को आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो ये भी एक चीज है जो इनडायरेक्टली बच्चों के ऊपर इन्फ्लुएंस डालेगा, हाँ, और उनको इंस्पायर करेगा कि कैसे ऑर्गेनाइज करके काम को किया जा सकता है। बिल्कुल। Strike up a conversation with a colleague that you don't speak to very much. Interpersonal skills पढ़ाने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, हाँ। जिससे आप ज्यादा बात नहीं करते, जिससे बात करते हैं उससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो आप बहुत सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन जिनसे आप ज्यादा बात नहीं करते हैं, अगर आप एक छोटा सा कन्वर्सेशन उनके साथ भी अगर करते हैं ओकेजनली, तो उनको भी लगेगा कि दे आर बीइंग नोटिस्ड, उनको आप भी ध्यान रखते हैं, हाँ। So that is one point. Next is write a funny joke on your board on the students to read when they enter in the classroom. Yes, जब जाने के बाद आप स्टार्ट करते हैं तो एक हैप्पी नोट से अगर स्टार्ट करें तो क्लासरूम काफी हद तक बढ़िया रहता है। Take a short walk during your lunch or preparatory period or leisure period after or even after the school. And during the walk, think about the things in your life that make you the happiest. आपको कौन सी चीज ज्यादा खुश रखती है उसके बारे में भी थोड़ी देर सोचिए, क्योंकि जब आप सोचेंगे उस टाइम पर तो नेचुरली एक पॉजिटिव वाइब आएगी और आपको एक एनर्जी मिलेगी ताकि आप और चीजों को अच्छे से कर सकें। Calm the paper chaos. Organize the papers or the student work by filing them, throwing them away, जो वेस्ट हो गया, पुराना हो गया, उसको हटा दीजिए, or by putting them in an orderly fashion. So think of a student who is behaved and always works well, but they might not stand out as a top student. So call that student parents, guardians with some praise. भाई जो अचीवर्स है, जो क्लास में टॉप करते हैं, वो तो अच्छी बात है,
लेकिन जो फर्स्ट टॉपर के बाद सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, फोर्थ टॉपर, फिफ्थ टॉपर, 10 तक है, 11 तक है, उन लोगों के साथ भी बात करना चाहिए। और वो हमेशा से तो उस पोजीशन पर स्टैंड नहीं कर रहे थे, तो उनका जो अचीवमेंट है, तो ये अचीवमेंट अगर उनके पेरेंट्स तक कम्युनिकेट करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे को लगेगा कि देयर अचीवमेंट्स आर बीइंग नोटिस्ड एंड बीइंग प्रेज्ड, तो दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो इसके बारे में भी बात हमें करना होगा, ध्यान रखना होगा। देन कॉम्प्लीमेंट another teacher on something they have done well for their students or even the school. Appreciations goes a long way, है कि नहीं? आपको जैसे अप्रिसिएशन अच्छा लगता है, इसी तरह बाकी लोगों को भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो जैसे आपको किसी ने अप्रिशिएट किया तो आपका भी फर्ज है कि दूसरे को अप्रिशिएट करें। छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं तो छोटे छोटे ही अप्रिसिएशंस कीजिए। निश्चित तौर पर वो छोटे छोटे अप्रिसिएशंस जो है दूसरे को लगेगा कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा काम करने पर जो अप्रिसिएशन मिल रहा है उससे मोटिवेट होकर के वो और अच्छे अच्छे काम करेगा। ये हैप्पी स्कूल की तरफ हम लोग जा रहे हैं कि कैसे अगर हैप्पी क्लासरूम है तो हैप्पी स्कूल हो जाएगा हमारा। बिल्कुल। Don't do any work during the lunch today and don't feel guilty about it. एक दिन लंच को स्किप कीजिए और उस टाइम को दूसरे किसी काम में इन्वेस्ट कर लीजिए। और ये नहीं कि आज हम भूखे रह गए तो नहीं, उसको कंप्लेन मत कीजिए, उसको भी अपने पॉजिटिव इस पर लीजिए कि हमने तो ये जानबूझ के छोड़ा है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कब खाएंगे कब नहीं खाएंगे तो हम अपना खुद से डिसाइड करें, और हम जब चाहे तब खुश रह सकते हैं, हमको चाहे खाना मिले या ना मिले। तो इस टाइप से अपने लिए भी कुछ मोटिवेशंस हम कभी भी लेकर के आ सकते हैं। बिल्कुल, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। So at the start of class, pass out index cards and ask students to respond to this prompt. I wish my teacher knew this about me. ये भी तो कर सकते हैं कि क्लास स्टार्ट हो तो एक स्टूडेंट को बोले कि बताओ तुम में ऐसी कौन सी खासियत है जो तुम चाहते हो कि लोग जाने, एटलीस्ट आप जाने, टीचर जाने। तो उससे उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि वो अपने माइंड को स्पीक आउट कर सके, और जो कुछ भी वो उसके दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल, हाँ। तो उससे उसको जानने में, पहचानने में आपको सहूलियत मिलेगा। ओके, देन एक डेस्क प्लानर भी आप बना सकते हैं, और एक टाइम आप उसके ऊपर भी, एक दिन आप उसके ऊपर भी इन्वेस्ट करें। देन राइट अ थैंक यू नोट टू द कस्टोडियन हु क्लीन्स योर क्लासरूम टू टेल हिम और हर दैट यू अप्रिशिएट देयर वर्क बिकॉज इट्स यूजुअली अ थैंकलेस जॉब। तो उनके बारे में भी, जिनको आप लगता है कि जिनको ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनको भी आप एक थैंक नोट जरूर दे दें। Use the last few minutes of class to take a photo of your students as a group. Print this picture and post it in your classroom, ताकि उनको लगे कि हाँ वो एक ग्रुप है और टीम वर्क को एनहांस करने में हेल्प मिलेगा। Give a compliment to the student who often seems to be in trouble. Say it somewhere where other students might overhear. ठीक है, डायरेक्टली नहीं, लेकिन लोगों को सुनाई देना चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, बिल्कुल, कि कुछ चर्चा हुई है। So clean up the small area in your class that has been getting a bit disorganized. Play some relaxing music while your students are working today. Start the day off by thinking of 3 things you are doing really well as a teacher. Say those 3 things out loud to yourself. Make time for exercise today. It can be a walk after a work, a trip to the gym, or you could even try a short exercise video on YouTube. Write a note to the student who has done something kind or thoughtful to show. दूसरे को दिखाने के लिए निश्चित तौर से ये काम करना चाहिए। Yes, to show them that good deed is noticed. Organize the files on your computer desktop. Make the title folders and put the documents in them. क्योंकि जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं अगर कभी, तो उस टाइम पर अगर हमारा डेस्कटॉप ऑर्गेनाइज लगता है तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। Then share a successful lesson you have with your colleague to teach the same subject or grade level as you. Encourage them to try it out. Think of a student
who doesn't get recognition. Display the students' work in your classroom somewhere, of course, with their permission. Then drink water. Drinking water helps energize muscles, keep your kidneys healthy, and keeps you looking great. So have at least a bottle near in your classroom and attempt to drink at least 2 liters a day. Think about the top 5 things you love about teaching. Write them down and have them somewhere as a reminder when teaching gets stressful. Do something nice for a colleague. Bring them a coffee, you share a lunch, put a little treat in their mailbox, or do something else thoughtful. Are you having an issue in the classroom? Don't try to deal with it on your own. Walk to a colleague that you respect to ask their advice on how to deal. इससे भी interpersonal skills हमारी जो वो change हो जाएंगे. Greet the students at door and give them a high five as they enter. If they are a high school, they will roll their eyes, but they'll secretly think you are awesome, right? So these were some of the things that we can do and take a 30-day Happy Teacher Challenge, and that's all. Thank you. And our time starts now. 30 days. Sure. So your time has already started. I hope you will be doing these things in coming days. Thank you, sir. Thank you, sir, for so actually. Once again, annually thanks to Mr. Nirendra Prakash Singh. Happy teachers create happy classroom. We have learned a lot of things. Bhagalpur Saradya is thankful to Mr. Nirendra Prakash Singh and all the participants school who are participating in this very meeting and training session. After 5 minutes, we will gather here for the next session. The next session is importance of personal hygiene and nutrition.